you are watching NTV Houston. मैं हूं मदीहा मसूद। स्ट्रेस को जनरली इग्नोर किया जाता है, मगर इसका रिस्क फैक्टर कभी कम नहीं होता है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है जो ऑलरेडी डील कर रहे हैं ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या दूसरी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन से। Here to answer some vital questions is Dr. Suleiman Lalani. Thank you so much, Dr. Lalani, for joining us today. Thank you for inviting. Good evening, good morning, whatever the time zone for your viewers are. I'm very happy to join you. Thank you. Okay, Doctor, tell us, कोरोना वायरस पेंडेमिक जनरल है, क्या इम्पैक्ट है इसके कोविड पर और स्पेशली क्वारंटीन के एल्डर सीनियर सिटीजन्स पर? So coronavirus जो है आपको you know why it is called corona. It's actually when you look at in the electron microscope पे आप देखें तो it's a round ball shape which has spikes on it. It looks like a crown. And crown in Latin is called corona. That's how the virus name is coronavirus. We also know it as COVID-19. COVID means CO is corona, VI is virus, D is disease, and it came up in 2019. So that is how it is COVID-19. This is not the 19 and we have another 18 in front of it. This is how it is COVID-19. This is a pandemic that is happening. Every so often, we have gone through pandemics. We have heard about swine flu, 1918. Before that, Black Plague and things like that have happened. This time, almost 3 million people globally have been affected. This coronavirus has taken us hostage, all humanity, all across the globe. Over 3 million people have been affected. You hear that so many people have died. In America, about 1 million people have been affected. But I want to also share here that almost 1 million people have recovered globally, and almost about 150,000 people in US have recovered. So there is a light at the end of the tunnel. And, humanity, we humans are very resilient. And God willing, if we stay together and stay focused, we will find the solutions. Until the medical community finds the cure and vaccines and prevention, we need to practice our best practices. No handshake, wash your hands frequently, frequently disinfect the surfaces that we come across. That would be our cell phones, doorknobs, car handle, whatever, desk, computers, that we need to do that. Avoid going out. If we need to go out, make sure we cover our faces with masks, wear our gloves. When we come back inside, and outside also maintain social distancing, because there is a science behind it that 6 foot that coronavirus is a particle. So it falls to the ground. It takes about 3 to 4 feet. If somebody coughs, it goes down. That's where 6 feet of arbitrarily line that has come up. When we go back home, it is very important that we follow a disinfectant protocol. Make sure we disinfect the soles of our shoes, leave them outside, change our clothes. If we bring in the groceries, we need to be careful so we're not bringing the infection again. A lot of people have been affected throughout the world, so I think some population are more vulnerable than others. And in that regard, the elderlies are one of that segment. So let's talk about them. Okay, so elders के लिए क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं? उन्हें किस हद तक इफेक्ट कर सकता है कोविड-19? So COVID-19 इस वक्त जो है ना हर किसी को अफेक्ट कर रहा है. I mean, generally speaking, elderlies are more affected क्योंकि उनके पास कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं. पहले से उनको कुछ ना कुछ बीमारियां चल रही होती हैं, उनकी इम्यूनिटी अगर कम होती है, और फिर somehow the virus has been shown initial stages के अंदर कि it was more severe in the older age group. इसलिए कहा गया था कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं प्लीज घर पे रहें और ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें. इसके अंदर जो खास बात मैं नोटिस कर रहा हूँ कि what is happening with self quarantine, which we are saying social distancing. So social distancing does not mean social isolation. और social isolation हो रहा है हमारे सीनियर्स के साथ. उसके साथ साथ वो जो है कुछ fears जिसको हम phobias कहते हैं वो develop हो रहे हैं. एक तो fear develop हो रहा है कि family has abandoned us, कि हम अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को नहीं देख सकते, नहीं मिल सकते, वो हमको मिलने नहीं आते. अब हमारा क्या होगा? गॉड फॉरबिड हमको कुछ हो गया तो फिर हम कैसे कनेक्ट करेंगे? So they are creating that fear is coming. And I want to share कि in this time and age where technology is there,
Aj, if I ask your viewers how many of you have your smartphone, I'm sure out of 10 will raise their hands. So सबके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है. Why don't we use it for positive purpose? Make sure आप करें dinner time करें, आप prayer time करें. आप you don't have to wait for a celebration कि भाई happy birthday celebrate करेंगे तो हम connect होंगे. Every day find a reason to connect. Read a book, play with your grandchildren. It can be on opposite side too कि आपके बच्चे आपको read कर रहे हैं, कोई नई चीज सीखिए. So we can utilize this time to connect, and we don't want to isolate. Number two, there are a lot of things available, what we call medical alert, that they can wear as a necklace or bracelet. God forbid अगर कुछ होता है, they can press the button, it will go the message to their children, message will go to 911 and appropriate places. So there are things in place that can be utilized. ठीक। Next of the social isolation, sorry. डॉक्टर, इस पेंडेमिक की सिचुएशन में बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी चली गई हैं, लेकिन उनको अपने एक्सपेंसेस भी मीट अप करने हैं। क्या आपने हाइपरटेंशन में राइज देखा है? मैंने बहुत सारी क्रॉनिक इलनेसेस में राइज देखा है. दो बातें आई वांट टू कंटिन्यू एंड फिनिश द टॉक ऑन सोशल आइसोलेशन में. व्हिच आई एम सीइंग इज देयर इज अ फाइनेंशियल स्ट्रेस दैट इज कमिंग, व्हिच यू आर ब्रिंगिंग अप टू द पॉइंट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग अपनी बजटिंग करें, अपनी स्पेंडिंग में किफ़ायत शार अपनाएं और अननेसेसरी खर्चा ना करें, और अपना बजट रखें कि क्या करना है. लुक फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स जहाँ उनको हेल्प की गई है. काफ़ी सारी जगहों पे जो सपोर्ट मिल रहा है फाइनेंशियल, उसको हासिल कीजिए. आप अगर को नहीं कर सकते, आप अपने इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं हमारे कम्युनिटी में, नॉन प्रॉफिट्स हैं, उनके साथ हेल्प कीजिए. अपने फ्रेंड और फैमिली को कनेक्ट कीजिए, एंड दे विल हेल्प यू इन दैट रिगार्ड. Two other important things I feel in isolation that is happening is they're worried about medications. So please make sure कीजिए कि आप अपनी medications refill रखिए. 90 days की refill लीजिए instead of 30 days. Or don't make it at the end moment. Make sure you are asking for your refills way before time. क्योंकि कभी 1, 2, 3, 4 दिन लग जाते हैं आने के अंदर. और बहुत दफ़ा medication जो है by mail आपके घर पे भी आ जाती है, तो आपको बाहर लेने जाने की ज़रूरत नहीं है. Find with your insurance, find with your other agencies से किस तरह से ये मुमकिन है कि medication आपके घर आ जाए. और लास्ट ये लोगों को परेशानी होती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जाऊंगा डॉक्टर के पास या जाऊंगी डॉक्टर के पास. सो लॉट ऑफ डॉक्टर्स ऑफिसेज आर राइट नाउ डूइंग ऑनलाइन केयर. सो ऑनलाइन इज़ वेरी सिंपल. अगर आपके पास स्मार्टफोन या आपके पास कंप्यूटर है तो आप ज्वाइन कर सकते हो. जिस तरह हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह आप अपने डॉक्टर ऑफिस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और आपका टेक केयर कर लेंगे. सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट. ओके डॉक्टर, क्या सडन इमोशनल स्ट्रेस पोटेंशियली ट्रिगर कर सकता है हार्ट डिजीज को या फिर कोई हार्ट अटैक को? ऑफ कोर्स कर सकता है. ह्यूमन बॉडी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इज वेरी इंटर रिलेटेड. तो हम ये नहीं कह सकते कि एक हिस्सा जो है दूसरे हिस्से से दूर है. इफ यू आर अफेक्टेड समथिंग, द होल पार्ट ऑफ द बॉडी gets affected. And certainly brain plays a big role. It's like a mega organ that controls everything. So stress certainly can lead to blood pressure, can lead to diabetes, can lead to uh, uh, inability to sleep, and all of that can create to overeating, again anxiety, again blood pressure rise, again to your heart attack and things. Yes, it is very much possible. ओके डॉक्टर, मैं चाहती हूँ कि आप हमें समझाएं कि व्हाट इज डिमेंशिया, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. So yes, I want to also kind of address here 2 points more, if I अगर आप जी इजाजत जी. दें. Chronic illnesses जो है ना, अमेरिका के अंदर 40% of Americans are going through any chronic illness, and if it goes to seniors it doubles. So 80% of our seniors have some kind of chronic illness. और 67% जो हैं जो इनको एक से ज़्यादा illnesses हैं. इसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर आ गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया, डायबिटीज़ आ गई, डिप्रेशन आ गया, डिमेंशिया आ गया, आर्थराइटिस आ गया. तो आई एम सीइंग कि पीपल आर इग्नोरिंग देयर क्रॉनिक इलनेस को. उनका ख्याल करना, दवा नहीं ले रहे टाइम पे, डाइट बराबर नहीं रख रहे. सो बहुत सारे मैं देख रहा हूँ डायबिटिक के मरीज जो हैं वो खाना ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, फिर दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं वो, और ऊपर से स्ट्रेस है तो शुगर जस्ट जंप्स अप. So, it just affects. So, we need to make sure that we take care of our chronic illness. Two things. One, we don't want to end up in the hospital, which are already overblown with the COVID patient. आपको उस फ्लोर पे, उस रूम में, उस वहाँ शेयर नहीं करना. तो whatever we can prevent, let's try to prevent it. आपने पूछा what is dementia? Dementia is one of the illness. It's one of the syndrome that we say, which affects our memory. So people are forgetful.
नंबर टू, there's inability to learn new things, कि वो नई चीजें नहीं सीख पा सकते, रिटेन नहीं कर सकते कोई नई इंफॉर्मेशन. एंड नंबर थ्री, दे आर सो मच अफेक्टेड दैट दे कैन नॉट लीड देयर नॉर्मल लाइफ. अगर ये तीन चीजें होती तो हम कहते हैं इनको डिमेंशिया सिंड्रोम है. ठीक. What can we find out? There are few things that you can find out. जैसा आपने बताया अभी सोशल आइसोलेशन हो रहा है, लोग परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, तो lot of things are coming out. और you know, अगर आप दो चार चीजें, I will just point out, it's difficult to say everything all together, but अगर आप देख रहे हैं कि forgetfulness महसूस हो रही है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बार बार आपको पूछ रहे हैं, आप कोई बात बताते हैं, फिर दोबारा 5 मिनट बाद फिर वो बात पूछते हैं, तो भूल जाते हैं. उनको डेट याद नहीं रह रही, उनको क्या किस जगह पे रहते हैं वो याद नहीं रहता, तो forgetfulness is coming up. नंबर टू, इनएबिलिटी टू प्लान एनीथिंग. अभी कोई इंसान जो है खाना बहुत अच्छा बना सकते थे, अब यू कैन फाइंड आउट कि कभी उनकी चीनी ज़्यादा हो रही है, कभी उनमें नमक कम हो रहा है. The grandma who was popular for baking cake on the birthday, now the cake doesn't taste as it's supposed to be. It gives you a little finding in that regard. You know, उनके चेक बुक बैलेंस नहीं हो पा रहे, वो अपना बिजली का बिल, यूटिलिटी का बिल्स भरना भूल जाते हैं. तो थिंग्स ऑफ दैट नेचर इट शुड कम इनटू माइंड के कुछ गड़बड़ हो रही है. कुछ चीज़ें फॉरगेटफुलनेस भी होती है, कभी हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, वी आवरसेल्फ फॉरगेट समटाइम. तो कभी हम, जैसा हुआ होगा कि आप कभी गेम देखने गई हैं, कभी मूवी थिएटर में गई हैं, कभी मॉल में जाएं, और फिर हम भूल जाते हैं यार गाड़ी कहाँ पार्क की हुई थी. सो आई ऑलवेज जोक विद माई पेशेंट, आई से, if you forget where the car is, it's all right. But if you forget that you came in your car, then is a problem. So that's what we need to look for, कि ये बार बार चीजें क्यों हो रही है, प्लानिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, भूल रहे हैं. तो this is what dementia is. ओके, आपने काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया. डेफिनेटली ये हेल्पफुल है हमारे व्यूवर्स के लिए भी. फर्दर बताइएगा, क्या स्ट्रेस ट्रिगर कर सकता है एस्थमा सिम्टम्स को भी, लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंजाइटी एंड पैनिक? It can certainly do that. The asthma is a reaction जो होता है, and the reactants could be anything. It could be physical, it could be emotional. It is stress related. So certainly it can do that. Okay, with so many people facing ongoing stress, can this trigger depression and anxiety? As I said, it can trigger a lot of things in place, and we have to be mindful about that. We have to be mindful कि अगर आप कोई chronic illness से suffer कर रहे हैं, be it dementia, be it depression, be it been anxiety, be it been high blood pressure, we need to manage and make sure that we take good care of ourselves. Okay, what is advance directives and why should we have it? So that's a very important and good question. And advance directive is like a living will. जैसा आप अपनी वसीयत करते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे फाइनेंस का ये होगा, इस तरह आप अपने जीते जी अपने लिखते हैं कि if you are unable for some reason, if you cannot take medical decision, तो फिर आपके साथ क्या होना चाहिए. सो यू कैन हैव अ पावर ऑफ अटर्नी, आप किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लस आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपके साथ क्या हो. अगर आप खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना है, आपके साथ आपको क्या मशीनों पे इंट्यूबेट किया जाए, वेंटिलेटर पे रखा जाए, क्या आपका खुदा न खास्ता अगर आपका हार्ट रुक जाता है तो क्या आपके साथ CPR किया जाए, क्योंकि ऑल दीज फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट. और CPR जो है ना, हम अक्सर जो टीवी पे देखते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, एक स्क्रीन के अंदर हार्ट अटैक हुआ, फौरन से EMS आई, उन्होंने 2 पंप किया, और सेकंड स्क्रीन के अंदर बंदा उठ के चलने लगता है. इन रियल लाइफ दैट डज नॉट हैपन. अ रियल CPR कैन इनफैक्ट ब्रेक योर रिब्स. इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी कौन सी कोमोर्बिडिटीज है. अगर आपको 15 साल से डायबिटीज है, 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं, स्ट्रोक है, फिर आपका हार्ट रुकता है, तो चांसेस ऑफ रिवाइवल इज वेरी स्लिम. प्लस व्हेन यू कम बैक, अगर आप रिवाइव भी हो जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस आर हाई. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसका डिसीजन ले. देयर इज नो नथिंग राइट और रॉन्ग अबाउट इट. इट्स वेरी एथिकल एंड पर्सनल. सो ज़रूरी है कि आप एडवांस डायरेक्टिव बना के रखें, स्पेशली इन दिस टाइम व्हेन ये कोरोना वायरस का सिचुएशन चल रहा है, रेस्पिरेटरी इलनेसेस हो रही हैं. अगर आप खुदा ना खासा हॉस्पिटल जाते हैं तो आया आपने ये सब चीज़ें करनी हैं, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें आई सी इज़ वेरी अनफेयर. इट्स अनफेयर to have something with you which you don't want. Number 2, is very unfair for your children or loved one to decide what to do for you when they don't know. वो अलग से अपना परेशान हो रहे थे, फिर ये डिसीजन लेना पड़ता है. तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एडवांस डायरेक्टिव्स किसी को अपना पावर ऑफ अटर्नी बनाएं कि भाई अगर मैं किसी वजह से डिसीजन न ले सकूं तो ये चीज़ें मेरे साथ करनी चाहिए.
ओके डॉक्टर, एल्डर अब्यूज केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, आपकी नज़र में इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? ये काफ़ी होता है और फिर ये बढ़ते भी जा रहे हैं। इस ये बहुत किस्म, ये फाइनेंशियल अब्यूज़ हो सकता है, ये इमोशनल, साइकोसोशल अब्यूज़ हो सकता है। लास्ट वीक आई वाज़ इन अ मीटिंग वेयर वन ऑफ द जज वाज़ डिस्कसिंग कि उनकी कोर्ट में एक केस है जहाँ उनकी बेटी is actually financially abusing the mom, almost taken $30,000 over the period of time, और उसको बाहर, घर के बाहर लॉक आउट किया हुआ है। सो बहुत दफ़ा इस तरह की चीज़ें होती है, बहुत दफ़ा इमोशनल अब्यूज़ होता है कि आप फाइनेंशियली तो टेक केयर हो रहा है, पर आप बातें उनके साथ किस तरह से करते हैं, उनके साथ आपका रवैया कैसा है, आप उनको इज्जत से बात करते हैं कि नहीं करते। लॉट ऑफ दोज थिंग्स डू कम इनटू दैट प्ले, एंड अगेन दोज अब्यूज कैन रिलेट टू anxiety, stress, depression, then it can relate to a lot of other physical illnesses also. तो ये बिल्कुल फर्क पड़ता है और इसका बिल्कुल ध्यान रखिए। दूसरा, another type of abuse, what I see indirectly is telemarketing हो रही है। फोन कॉल आते हैं, फलां चीजें खरीद लीजिए, इतना सेल में हो रहा है, और आई हैव सीन elderly fall for it and they give their credit card number right away. वो अब्यूज हो जाता है। टीवी पे बहुत दफा, स्पेशली रात के टाइम पर, I'm so surprised कि ये हमेशा ये जो मार्केटिंग होती है, it happens on the time where normal people sleep, these people are awake, और उसको ये चीजें बेची जा रही होती हैं, और आप देखिए तो उन्होंने ये खरीदा हुआ है, वो खरीदा हुआ है, ये $2 की, ये 5, and then it makes up, and then it kind of becomes a financial stress. So I would advise, be careful, people who can manage that part, be prudent with that, be very cognizant कि आपसे कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन किसी को मत दीजिए पर्सनल। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा बर्ताव हो रहा है तो प्लीज देयर आर हेल्प, सो डोंट फील अलोन। अपनी कम्युनिटी में बहुत सारी एजेंसीज, एनजीओज हैं जो काम कर रही हैं, उनके साथ आप कनेक्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज के साथ कनेक्ट कीजिए। कुछ नहीं हो सकता तो 911 कॉल करके बताइए, बट प्लीज डोंट सफर फ्रॉम अब्यूज। ओके डॉक्टर लालानी, बताइए क्या पेंडेमिक लीड कर सकता है एपिडेमिक ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन की तरफ? It can certainly do, क्योंकि बैठे बैठे, lot of things do create, and then it's kind of a mix of things कि आपने एंजाइटी भी हो रही है, आप अकेले बैठे हुए लोनलीनेस भी फील हो रहा है, फिर आपको फाइनेंशियल अगर इश्यूज आ रहे हैं, फिर लॉट ऑफ टाइम्स देयर आर फिजिकल इश्यूज दैट कम इन, फॉर एग्जांपल ग्रोसरीज कैसे लाएंगे, मेडिकेशंस कैसे लाएंगे, तो लॉट ऑफ वरीज डू डेवलप एंड दैट certainly can lead to these things. So how to deal with it is, it would be a second question should come as to how to deal with your cold chronic illness, or how can you practice wellness in this pandemic. I think it's basic things that we want to do is basic healthcare practice that we want to do. We want to practice more in these times. So सबसे important बात तो ये है कि please panic ना कीजिए, but stay informed. It creates a negative thought process subconsciously in your mind, seeing the same negative information again. And then a lot of time in our elderly, especially if they are going through emotional stress, depression, or cognitive decline, they may not be demented, but they may have some cognitive issue. They may not relate to reality of what is happening and what is repetition and what is not the fact, what is the myth. So limit that part. दूसरा, credible source के अंदर you can utilize your family. So it can be also good time when you connect on your FaceTime, talk to your children कि आजकल क्या हो रहा है, कौन सी नई न्यूज़ है, कौन सी नई दवाई आई है. So that is a good information of connection also. Next, I would recommend is healthy diet and hydrate yourself. अब diet in itself तो हम पूरी किताब लिख सकते हैं और program हो सकता है. I would just recommend कि make sure you're use the fresh produce as much as you can rather than relying on the canned foods. दूसरा, हाइड्रेशन की बात है, हम अक्सर खाने पे ध्यान रखते हैं बट पानी नहीं हो रहा होता पूरा, तो you must drink 6 to 8 glasses of water. This program is going in Ramadan, month of Ramadan and fasting, if somebody is going through that. So make sure you hydrate yourself at the sehri time and iftar time, and at the night time in between you do that. Because I see that headaches, dizziness, fall, passing out, constipation, a lot of these things are related to hydration. They are not properly hydrated. And it's a very simple solution, and we go through a lot of consequences of that. Next also is exercise.
इज एक्सरसाइज। इम्पोर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्सरसाइज, यू डोंट हैव टू पंप आयरन। थोड़ा सा आप वॉकिंग कर सकते हैं अपने बैकयार्ड में, अपने नेबरहुड में, some kind of physical activity to maintain that for 30 minutes a few days a week. That is good, but also do mental exercise, which I will bring it here for our seniors. Make sure you do memorization exercise. How would I mean by that? कि हम जैसे बात ग्रोसरी लिस्ट बना रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उस लिस्ट में कितनी चीजें मुझे याद हैं। आप कोई सॉन्ग आपको पसंद आता है, कोई चीजें आप सुनते हैं, उसको मेमोराइज कीजिए। लोगों के फोन नंबर को मेमोराइज कीजिए। सो हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स यूजिंग योर माइंड। नंबर टू, व्हेन यू प्लेइंग गेम्स, प्ले गेम्स विच आर यूजिंग थिंकिंग स्किल्स। सो इवन आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बच्चों के साथ खेलते, अगर टाइम गुजारना चाह रहे हैं, तो आई वुड से प्ले चेस, that is a good game. Sudoku, those are things which makes you think. It's not just playing like that, and so things of that nature are good to do that. And then create new hobbies, learn new skills, read books. That could be a good social skills also for yourself and for so exercise, mental and physical important. हो गया, hydration, feeding हो गया number. Next is sleep. Americans are always on the go and we always complain that we don't have time. This is our opportunity. We have time. So make sure you get enough sleep. और जो ऐसा आप पहले पूछ रही थी stress related, of course, if you don't get enough sleep, then you build up stress. You have some hormones that are released and neurotransmitters that are released in your mind, and then you get into problems. And that can, mental illness can lead to physical, and then high blood pressure and other things happen. So take enough sleep. ओके, डॉक्टर बताइए कि लोग घर रहकर अब एग्जॉस्ट हो गए हैं, जैसे कि आपको भी पता होगा कि कल से जो है ये लॉकडाउन की सिचुएशन ये एंड हो रही है और 25% कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट्स और हर चीज़ ओपन हो जाएगी। आपको क्या ये सेफ साउंड कर रहा है? This is an interesting question. If you do, you are in trouble. If you don't, you are in trouble. But ये बात है कि humanity is very resilient. At certain point, we need to do things. We cannot just hide in the bubble. तो हमने ये सोशल डिस्टेंसिंग की थी कि ताकि तो जो के नंबर ऑफ केसेस जो आए वो कम से कम हो सकें तो हम मैनेज कर पाएं. Now what I hear that we have enough capacity in the hospitals and the medical team that we can manage. Number two, ये है कि this does not mean that you just get out and have a party. It means that you have to be out and you have to be very very cautious about it. तो अगर आपको जाने की ज़रूरत है तो फिर आप बाहर जाइए. I would still recommend कि for social issues, for fun, please avoid going out. Number two, if you are having some kind of illness, अगर आपको chronic illnesses हैं, अगर आपकी तबीयत खराब है, तो be very much more mindful. नंबर थ्री, अगर आपके घर में ऐसे कोई अफराद हैं जिनको क्रॉनिक इलनेसेस हैं, जिनके साथ उनकी इम्यूनिटी कम हो सकती है, आपको लगता है कि उनको प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो बी माइंडफुल ऑफ दैट टू. सो वी हैव टू बी क्रिएटिव और विद टाइम वी हैव टू अडेप्ट. सो अगर बहुत सारी चीज़ें अगर आप ऑनलाइन कर सकते हैं, घर से बैठे काम हो सकता है, घर से बैठे आपकी ग्रोसरीज हो सकती है, घर से बैठे आपकी स्कूलिंग हो सकती है, तो आप मैनेज कीजिए उसको. अगर आपको ज़रूरत पड़े बाहर जाने की तो मेक श्योर कीजिए कि यू प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग, यू प्रैक्टिस प्रॉपर hygiene, you make sure that your face is covered, you make sure you're wearing your gloves, make sure you are not touching places which are unnecessary, make sure you're disinfecting places. This is very important. हमने ग्लव तो पहन लिया, लेकिन अगर वो ग्लव हर जगह टच कर रहे हैं और फिर उसी ग्लव वाले हाथ से आपने जेब पे हाथ डाल के अपना वॉलेट निकाला और क्रेडिट कार्ड निकाला, तो हमने जम्स तो उधर ही फैला दिए. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी फॉलो द प्रॉपर प्रोटोकॉल. और फिर जब हम घर आ रहे हैं तो वी नीड टू फॉलो द प्रॉपर प्रोटोकॉल ऑफ डिसइंफेक्टिंग आवरसेल्व्स. तो शूज़ बाहर निकालेंगे आप मेक श्योर करोगे कि आप अपने डिसइंफेक्टेंट से अपने हाथ को वॉश करेंगे, आप अपने कपड़े प्रॉपरली लॉन्ड्री में डाल देंगे, जो चीज़ें आप बाहर से घर पे ला रहे हैं उस पर आप ध्यान रखिए. तो जितना मुमकिन है आप अपना इन्फेक्शन कंट्रोल का ख्याल कीजिए. ओके, डॉक्टर लानिंग ज़रा ये हमारे व्यूवर्स को समझाइएगा कि ये एक इनविजिबल वायरस है, ये हमें दिख नहीं रहा है, तो मैथ से हम किस तरह से इसकी प्रोटेक्शन बना सकते हैं? सो ये वायरस जो है ना, इस व्हाट वी कॉल इज स्प्रेड्स थ्रू ड्रॉपलेट. तो ड्रॉपलेट जो है उससे ये फैल रहा है. तो अगर आपकी स्किन के थ्रू ये आपको अंदर नहीं जा सकता,
जबकि अगर आपके हाथ में है तो आपके हाथ से इन्फेक्शन आपकी बॉडी में नहीं जा सकता, जबकि कि आपका हाथ आपके आंखों को, आपके नाक को, आपके मुंह तक ना पहुंचे, and which are the membranes where virus is going through. So that's what it is when we wear mask. It does two things. एक तो ये है कि हमको conscious reminder देता है कि we need to keep our hands away and don't bring it to our face. Stay on that part. Number two ये है कि अगर आप कोई खांस रहा है तो that virus which is out there in a droplet form before it had hit the ground, अगर वो है तो उसको आप prevent कर सकते हैं. So there are different kinds of masks available. जो लोग, और ये भी है कि कितना आप रिस्क फैक्टर आपके पास है और कितना आप प्रोन हैं. तो अगर somebody is in the hospital and they are managing patient who have coronavirus, the quality of the mask is very different for them and protection is very different from them compared to somebody who is just managing at home or going to the grocery stores or going to the office. So there are different types of masks, but we need to that helps us prevent. ओके डॉक्टर, जो कोरोना वायरस से क्योर हो चुके हैं, कितने चांसेस हैं कि उनको दोबारा इफेक्ट कर सकता है ये वायरस? So this is a lesson in learning right now. जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं हम लोग उसको स्टडी कर रहे हैं, उस पर रिसर्च हो रही है. So there are a couple of type of immunities that is build up होती है. अब we don't know कि ये immunity कितनी long lasting immunity होगी, कि आया ये 3 महीने की है, 2 महीने की है, 1 साल की है, कितनी लंबी immunity होगी और कितनी strong रहेगी. तो we don't know the answer yet. There is an assumption that certainly people can be reinfected again. So we need to be careful. So somebody who has gone through, unfortunately, but fortunately has survived, I would still say take precautions. ओके ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर लानानी फॉर योर प्रीशियस टाइम. आई होप आपकी एडवाइसेस लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और लोग यूनिटी के साथ अपने एल्डर्स को सपोर्ट करते हुए पेंडेमिक की इस सिचुएशन को टैकल कर सकेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन. फॉर मोर अपडेट्स फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एंड कीप वॉचिंग NTV Houston.